These 10 questions are very very important. Why are these 10 questions more important than others? So ये सारी चीजें हैं that we have to study and I'll be covering all of it. So you don't need to worry. Everything that is written here, everything that has ever been asked will be covered and I'll show you what the methodology is going to be. मैंने ना 2023 में एक कोर्स पढ़ाया था साइंस एंड टेक के लिए. It was actually my first ever teaching project. I'll tell you what happened. Current affairs compilations did not have those questions. That does not mean current affairs से questions नहीं आते. And this is my challenge to you. Once the classes are done, आप खोल के देख लेना, आपको कुछ भी मिस होता हुआ मिल जाएगा. I am going to give you for revision a set of concise handwritten notes. These handwritten notes will act as your papers. कोई PYQ नहीं छूटेगा, कोई करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा. मैं आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखाऊंगा. Nothing will get left. That is my guarantee to you. Hello, good morning and welcome to this first orientation session of science and technology. अब पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ. Let me clarify a couple of things to you. So what we're going to do today is we're going to have an orientation of the entire subject. I'm not going to teach anything today. We are going to have an orientation of how these classes are going to run, what the schedule is going to be, how are you supposed to revise, etc., etc. ये सारी चीजें हम आज discuss करने वाले हैं. I have a lot of things to communicate to you. So first, I will communicate what I have to communicate. Only then I will take your doubts. ठीक है? Chat on है, private है, आप लिखते जाओगे जो भी. You will write paragraphs which I can see in the chat. मैं ले ही नहीं पाऊंगा आपके questions. ठीक है? तो पहले हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. I have to discuss a lot of things here about science and tech. Once this is done, I am assuming that most of your doubts will be cleared. ठीक है? उसके बाद कोई doubts होंगे तो then I'll take. Right? उसके बाद if there are any doubts, only then I'll take them. अभी you first for the next 1 hour you have to listen to me carefully and you have to listen to all of this. ठीक है? पहले ये एड्रेस करते हैं. उसके बाद अगर कोई टाइम बचेगा, उसके बाद टाइम तो बचेगा ही ऑफ कोर्स, उसके बाद कोई डाउट बचेगा तो तब हम वो डाउट ले लेंगे. ठीक है? So if any doubts are left after I'm done with the orientation session, only then I'll take those doubts. All right? चलिए, let's get started. So firstly we'll start with the weightage of science and tech. So this session is going to be majorly about science and tech. In the end of this session, I'm going to also talk of prelims a bit. Right? In the end of the session, I'm also going to discuss your strategy going forward for the next 2-3 months. But first, let's talk about science and tech. But science and tech detail में देख लेते हैं. Then we can talk also about prelims and everything else in between. So सबसे पहले, let's talk about the weightage of science and tech. How much weightage does it have in the prelims? ठीक है? 2020 में 12 questions, 2021 में 10 questions, 2022 में 14 questions, 2023 में 8 questions, 2024 में 10 questions. तो on an average अगर आप देखो तो approximately 10 questions are coming. अब these 10 questions are very very important. Why are these 10 questions more important than others? देखो यार, अगर polity में let's say there are 15 questions coming in polity, even you know that almost everyone will get 10 correct. है ना? You will agree with this that most, even if there are 15 questions of polity coming, 10 everyone will get correct, right? And nobody can get 15 out of 15. 15 out of 15 so nobody can get. So someone who is not clearing prelims will also get 10 correct. At best you can get, let's say, 13 correct. If you put in effort after effort in polity, a lot of effort in polity, you read all the books, you read the political concepts also, you can maximum create a differential here of 3 questions. And this 3 question differential will take a lot of effort, right? Actually, before I go into this, I want to explain something else to you. Let's talk about what the cutoff is, right? We are now all focused on the prelims. तो हम सबको cutoff हमारे दिमाग में चलता है. Cutoff कितना रहेगा? Will it be an easy paper? Will it be a tough paper? Let's talk about the cutoff. First. Somebody is asking why is the lecture bilingual? Because PRP is bilingual, foundation is bilingual. This is how we conduct every lecture at Sarrthi IAS. The content is in English and I speak bilingually, right? Anyway, so let's talk of the cutoff first. बात करते हैं कि cutoff होता क्या है. देखो यार,
cutoff is not dependent on number of easy questions. This is a way to predict the cutoff. It is not dependent on toughness of paper. इन सब पे dependent नहीं होता cutoff. This is not number of vacancies, etc. This is not how UPSC does not decide the cutoff. This is not how the cutoff is decided. What is actually the cutoff number? Cutoff number होता क्या है उसकी बात करते हैं. How many people will give the exam this year? 10 lakh people will fill the form, 5 lakh will give the exam actually, right? Mains की अगर हम बात करें, how many people will give the mains? This is decided by number of vacancies. So there are 979 vacancies. Multiply this by 13. So approximately 13,000 people are going to give the mains. So now we have two data sets. One is that 5 lakh people are giving the prelims. 5 lakh people will give the prelims. 13,000 people will give the mains. How is the prelims cutoff decided? How is the prelims cutoff decided? Whatever are the marks of this last 13,000th person, they will become the cutoff. So what will UPSC do? UPSC will, agar most of you might have read economics from me, so you know the concept of below poverty line, above poverty line, creation of a poverty line basket, and then calculating head count ratio. That is how poverty is measured in India. UPSC will also measure poverty. UPSC will put the names of everyone like this and will put the marks like this. So let's say first person gets 115 prelims, then someone gets 115, someone gets 90, someone, let's say 90 यहाँ लिख देते हैं, someone gets 80, then 70, then कोई महारथी 60 भी लेके आते ही होंगे. So you know, you put all the numbers like this, right? Then UPSC says, in this list, where is number 13,000? Okay, here is number 13,000. UPSC will put a line like this. Above this, everyone gives mains. All of these people give mains. Below this, these people do not appear in mains. This is the direct way how UPSC calculates the cutoff. So the marks of the last person are the cutoff. Okay. Now knowing this is the exact process. UPSC has agreed that this is the process and makes sense also, right? Now knowing this, what matters? Let's talk about that. If I know that this is true, matter क्या करता है? I have to be better than this person. I cannot end up here. I have to end up above this poverty line. This is the line of marks poverty, right? Arey, yaar, people are saying, what about category? Of course, UPSC will do this differently for different categories. वो general category के number एक जगह पे लिख लेंगे, general category वालों को qualify करा देंगे, right? आप schedule caste category को एक जगह लिख लोगे, उनको वहां पर एक line लगा दोगे. होना तो process तो same ही है. The process is the same. तो आप category मानो ना मानो, process तो यही है. तभी there is a cutoff number for each category. अगर कोई categories नहीं होती तो एक cutoff number आता. The categories does not change the process, right? So that anyway does not matter. So what matters here now? I have to be better than this person. Being better than this last person. ठीक है, मुझे इस बंदे से better होना है. This is what matters, right? So if this is what matters, I have to be better than this last person. Then I have to score better than him or her. Now let us examine who this last person is. इस last person के कुछ characteristics देखते हैं, right? Once we understand the characteristics of this last person, we will understand how we can be better than them. Let's look at some characteristics of this last person. This last person, what are their general trends or characteristics? This last person, and see, last is not wrong, right? This last does not mean that they are a bad person. They are the last person clearing the prelims. तो हम ये भी बन जाएं तो हमें खुशी होगी, right? And this is not a bad thing to be, right? What do these people do? They will study polity well. They will study geography well.
they will study even economics well, and they will study modern history well. Sometimes they will make some silly errors, but they will also get some questions right through guessing. इनके कुछ तुक्के लग जाएंगे, so some guesses will also work. And lastly, what they will ignore is science and technology, environment, ancient medieval art and culture, and IR, and even mapping. इस पे I will make a detailed video on YouTube. I call this the maze factor of prelims. Mapping, AMAC, international relations, science and tech, environment. This is what they are ignoring. Right? ये चीज वो ignore कर देते हैं. यहाँ पर they will put a lot of time and they will do these well. That is why they are giving mains. Although this selection in prelims might have been an accident, but इन चीजों को वो ignore करेंगे. Now we have to become better than this last person. So firstly we have to do everything that they are doing. ये तो हमें करना ही है. To become better than them, at least we first have to become equal to them. So we have to do everything that they are doing and at least do a couple of things better than them. Right? A couple of things better than them. Herein lies the game. In these 5, AMAC is ancient, medieval, history, and art and culture. Okay. In these five, we have to get ahead. The point I was trying to make was that we have to get ahead of these people. We have to get ahead of this last person, and this is the name of the game. The point here is, if I have to create a differential over this last person, if I have to become better than this last person, मुझे इस last person से better होना है. यहां पर बहुत scope है. A lot of scope lies in these subjects. Therefore, these subjects are the ones where we have to, make the difference from everyone else. It does not mean हम यहां पर we can relent. यहां पर हमें इनके बराबर तो करना ही है. हमें यहां पर इनसे better करना है. Then we will clear the cutoff with ease. We will clear it with a certain number. ऐसा नहीं होगा कि 87 cutoff है, हमारे 88 मार्क्स आ रहे हैं. ऐसा होगा कि हमारे 87 cutoff है और हमारे 115 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं. So I'll tell you my story in prelims 2021. 2021 was my first attempt. ठीक है. 2021 में it was my first attempt and I was fortunate that there were 25 questions from science and tech and environment. ठीक है. See, I was fortunate because of this. The other thing where I was unfortunate, actually not unfortunate, मेरी गलती थी. I made some silly mistakes in this paper. ठीक है. Despite making these silly mistakes, because this was the number of science and tech and environment question, out of these I got 18 to 19 correct. I don't remember the exact number, but somewhere around 18 to 19 I got correct here. What is the score I got in 2021? 115.15. इसको हटा देते हैं. 115 is what I got. What was the cutoff? Cutoff in 2021 was 87. Now you look at this gap. This gap is what matters, right? This was the prelims cutoff. Forest cutoff was 101. So in my first attempt, I am scoring 15 marks more than the forest cutoff also. How is this gap coming? Because of these two subjects. Because this is something everyone else was ignoring, right? And मैं आपको दिखाऊंगा that this is a eminently doable subjects. Both of these I have to teach you. Both of these subjects are eminently doable. At least doable much better than others. So in this context now, let us come back to this slide and remember what we were discussing. अगर 10 क्वेश्चन आने हैं साइंस एंड टेक के, if there are going to be 10 questions of science and tech and I have to create a differential, creating that differential is much easier here. बहुत easy है यहां पर differential create करना. Because here people are getting 1 to 2 correct. If you get 4 to 5 correct here, right, you can create a 3 question differential here with a lot less effort than it would take to create the differential in polity. Polity में किसी और से 3 क्वेश्चन और सही करने में, कि मेरे 10 सही हो और आपके 13 सही हो जाएं, आपको 2 से 3 महीने का एफर्ट करना पड़ेगा, जहां पर 2 हफ्ते के एफर्ट से भी आप 3 क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो सही. So this is the first point I'm making. Subject is important. If it is, if 10 questions are coming in the prelims, so at least 10% of my effort should go to this subject.
10% of my cumulative effort should go to the subject. 10% इसकी weightage है, 10 out of 100. So at least 10% effort should go here, and of course 10% is a lot, and that is why I am here to solve this problem for you, right? यहां पर हम differential create करेंगे from others, right? Economy मैंने आपको पढ़ाया है. देखो यार, economy में I can say, I mean I have probably done my best to ensure that you all have conceptual clarity, but लोग रट के भी economy question निकाल लेंगे. People will come and mug up. Maybe in the mains that's not true. Mains में आपको difference बड़ा clearly दिख जाएगा. Prelims में बहुत लोग आते हैं, economy के notes रट के आते हैं और questions निकाल लेते हैं. Here is where you can create a lot of differential from them, right? अब यहाँ की बात करते हैं. Let's talk about this in a bit more detail. इन questions को और analyze किया फिर मैंने. If you look at these questions, the good thing for you and me is that 40% of questions are coming from biotech and health, and thankfully a doctor is going to be teaching you this, है ना? So biotech and health is the key area here. 40% of 10, so 4 out of 10 generally are from biotech and health, and this is the key area to focus on. इसके आगे there is space and defense and emerging technologies, right? Emerging technologies में क्या क्या आता है? AI, blockchain, 3D printing, etc. All of these things are included here. Wi-Fi 6, for example, and space and defense. So these are the next two important areas. Then we come to quantum technology or quantum computing and nanotechnologies. So again, fairly important here. And then there are some other areas. अभी others भी important है. ये others में क्या है? यहाँ पर things are there that we ignore. Things like security, defense. Defense not in terms of defense technologies, but in terms of defense posts. For example, Chief of Defense Staff, Integrated Theater Commands, etc. And since I teach this in GS3 also, you will not have a problem here. Then things like intellectual property rights, role of scientists, these things are also included here, है ना? तो ये सारी चीजें हैं that we have to study, and I'll be covering all of it, so you don't need to worry. Everything that is written here, everything that has ever been asked will be covered, and I'll show you what the methodology is going to be. पहले ये distribution हमें समझ आ गई हो, I hope. अब देखते हैं. Let us look at the role of previous year questions. Then once I have explained to you all of these things, then I'll tell you how we'll study in the class. Let's look at the role of previous year questions. Let's try and solve this question with conventional wisdom. Which of the above can be cultured in artificial or synthetic medium? You have 30 seconds. Solve this question. Bacteria, fungi, virus. If you might know the answer, I'm trying to prove a point here. कई लोग लॉजिकल गेसिंग के बहुत शौकीन हैं आजकल. YouTube is full of these things. See, it's important. I'm not saying it's not important, but it can go wrong also. So it's better to have knowledge first. Logical guessing can be learned in April. Science and tech cannot be learned after April 20th, right? Which of the above can be cultured in a synthetic medium? बताओ जी answer. Tell me the answer. Good. Might know the answer, तो सही आ रहा है. That's good. Anyway, what does the conventional wisdom say? It's good that you are giving the right answer. अब मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूं. What does the conventional wisdom say? Conventional wisdom says that if can is written here, I should do all of the above. Science and tech में all of the above करना चाहिए, right? Answer you guys have given correctly is 1 and 2 only. Now, proving this is not the point. Let me show you what the point is. This is 2013 paper. Look at second statement. Viruses can be cultured in any synthetic medium. If I have solved this question, will I not be able to solve this question? It is the same question. It is effectively the same question, just asked in a different format. आगे देखते हैं. Look at this question. 2019. What is Cas9 protein often mentioned in news? Obviously, Cas9 is part of CRISPR-Cas9. That is being asked in 2019. Molecular scissors. This is written. This is 2019. This is 2018 paper. CRISPR-Cas9. Here the wrong option is given. Particle physics. ये गलत है. But अगर हम ये options analyze करते, तो 2018 का question 2019 में ही repeat कर दिया. Right? It did not even take them 1 year. They just repeated the same question next year. और दिखाता हूं आपको.
2020 pneumococcal conjugate vaccine, 2021 recombinant vector vaccine, 2022 COVID-19 vaccines, Serum Institute of India Covishield, Sputnik 5 Covaxin. Now what does this tell me? अगर 2020 में मैंने ये क्वेश्चन देख के वैक्सीन अच्छे से पढ़ लिया होता, फिर यहां पर दोबारा वैक्सीन दिखा होता, तो ये क्वेश्चन मैं कर ही लेता. I would have 100% been able to solve this question, right? अब look at this statement. Now look at this question. ये क्वेश्चन भी करते हैं, ट्राई करते हैं. Look at the second statement. A child inherits mitochondrial diseases entirely from the mother and not from the father, right? Is this an extreme statement or not? Yes or no? Only yes or no. Right wrong की बात नहीं करेंगे. Is this an extreme statement or not? Can you see if this is an extreme statement? है ना extreme statement? This extreme statement is correct. This is a correct statement. Answer here is both 1 and 2. I will have to read the first one. Yep. So answer here is both 1 and 2. This is an extreme statement. This extreme statement is correct. Conventional wisdom है कि extreme statement गलत है, इसको हटा दो, है ना. 2021 का ही पेपर है. This is the exact paper I was telling you about, where I scored 115 first attempt, because there were questions like this which I knew people would get wrong. This is how you create the differential. अब ये question, चलो, I have a biology background, right? So you can remove that bias कि ठीक है यार ये तो डॉक्टर है, इसको तो आता ही होगा. ऐसा नहीं है. जिसने PYQs अच्छे से किए हैं उसको भी आता होगा. This is actually talking of mitochondrial diseases, which we will be, and mitochondrial DNA, which we will be reading in our 3rd or 4th class. अब mitochondrial diseases को डील करने के दो तरीके होते हैं. One is pro-nuclear transfer, one is maternal spindle transfer. So it can happen pro-nuclear transfer or maternal spindle transfer. Pro-nuclear transfer happens after fertilization. अब यहां देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. After in vitro fertilization और बिफोर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. बिफोर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कहते हैं maternal spindle transfer. आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कहते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर. तो यही चीजें यहां पे थी. अगर मैंने ये पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन इजी है. अब मैं क्यों पढ़ूं ये? व्हाई शुड आई स्टडी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एंड maternal spindle transfer? लुक एट द क्वेश्चन ऑफ 2020 प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर. 2020 का क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया 2021 में. That is the role of PYQs here. So if anyone has to teach you science and tech, I'm going to teach you science and tech, for example. I cannot skip PYQs and you cannot skip PYQs. तो मैंने ये, जैसे हमने इकोनॉमी में किया था, we will be doing PYQs live in the class. हर क्लास के बाद 3 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा and I will teach you for 3 hours straight. 3 hours straight means that of course after 1 hour there will be a gap of some break of 2 to 3 minutes, 5 minutes जो हम break लेते हैं. 3 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा, फिर हम PYQs करेंगे. And I want you to develop this focus कि आप 3 घंटे बैठो, ठीक है. उस दिन प्रीलिम्स वाले दिन भी आपको इतना फोकस दिखाना पड़ेगा. दैट डे यू विल हैव स्ट्रेस आल्सो. यहां तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस दिन आपको खुद का दिमाग लगाना होगा. सो इन एवरी क्लास वी विल डू PYQs एट द एंड ऑफ ईच क्लास एंड दे विल बी लाइक अ टेस्ट. कट ऑफ फिगर दिया जाएगा और आपको क्लियर करना होगा वो कट ऑफ, राइट. एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा फ्रॉम 2013 टू 2024 देयर विल नॉट बी अ सिंगल क्वेश्चन दैट वी विल मिस, राइट. यहां पर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं दैट वी विल बी डूइंग CDS CAPF क्वेश्चंस, बिकॉज़ वहां पर जनरल साइंस बहुत ज्यादा आता है, राइट. दैट इज इन दोस पेपर्स इफ यू सी साइंस एंड टेक इज नॉट आस्क्ड, a lot of general sciences are, so it's a waste of time to go there. It's better to spend time analyzing all the options here. So all questions with all options we'll be doing here only, so you don't need to worry about that. ठीक है, आगे देखते हैं. अब ये है लास्ट ईयर का डेटा, 2024 का डेटा है, ठीक है. एक कॉमन रिटॉर्ट, ये इसकी बात कर रहे थे हम, द लास्ट पर्सन. व्हाट डज दिस लास्ट पर्सन स्टडी फॉर साइंस एंड टेक? चलो पहले आप बताओ, ये जो लास्ट पर्सन जो हम बात कर रहे थे, व्हाट डज दिस पर्सन स्टडी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? क्या पढ़ते हैं ये महाशय साइंस एंड टेक के लिए? PT 365. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस पर्सन थिंक्स दैट साइंस एंड टेक में PT 365 पढ़ लो तो काम बन जाता है. What is PT 365? PT 365 or any PT compilation, I have no beef with this particular organization, any compilation, they are a compilation of last 1 year current affairs.
यही है अल्टीमेटली, दिस इज व्हाट इट इज। तो यही पढ़ के जाते हैं कि 1 ईयर की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पढ़ ली और हो गया काम। अब हम डेटा देखते हैं। लेट्स लुक एट द डेटा। ये देखो डेटा ऑफ 2024 में हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम साइंस एंड टेक? 10 क्वेश्चंस केम, है ना। नाउ इन दीज 10 क्वेश्चंस let us look at how many questions were there in this PT compilation. Only one. So even if, and 1 out of 10 in PT compilation does not mean that you'll be able to solve 1 out of 10. But yes, okay, let's assume that whatever you read with proper efficiency. जो आप पढ़ते हो, आप अच्छे से पढ़ते हो, आप उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। 1 out of 10 only. तो अगर आपने पूरी PT पढ़ी, about you read 100 pages approximately, you would be able to solve 1 out of 10 because that's what you're reading. You're reading for 1 out of 10, you'll be able to solve 1 out of 10. अब आपको कुछ दिखाता हूं। I'm not trying to boast you, I don't have to boast in front of you guys, you anyway are going to study from me. मैंने ना 2023 में एक कोर्स पढ़ाया था साइंस एंड टेक के लिए। It was actually my first ever teaching project. I'll tell you what happened. I gave my first attempt in 2021. In 2021 obviously I did not make it, I failed in the mains. So in 2021 I cleared prelims, I did not clear mains. In 2022 then I cleared prelims, I cleared mains. My interview, which I obviously ultimately cleared, was on March 10th. March 10, 2023. CSE 22 का इंटरव्यू था। On March 15th, 2023, I started my first ever teaching project, and that was science and tech. So this was my first ever course that I taught. This is approximately 2 years back now. So this is the attempt where I actually finally got my rank, right? तो इस टाइम पे मैंने कोर्स पढ़ाया था फॉर प्रीलिम्स 2023। अब ऑब्वियसली अगर ये कोर्स 2023 में पढ़ाया गया है तो इसमें 2024 के करंट अफेयर्स तो नहीं है। दिस कैन ओनली be something that I have taught for 2023, does not have current affairs of 2024 obviously, right? Let me show you, let's compare now this course, if somebody had studied this properly, to the 2024 paper. देखते हैं। First question, this is about giant stars and dwarf stars. These are screenshots of the things that I had taught that time. This is a direct repeat. So first question, this is the 2023 course. तो current affairs तो नहीं है ना इसमें। I cannot teach 2024 current affairs in 2023. 2024 के पेपर को 2023 के कोर्स से कंपेयर कर रहे हैं। तो obviously any effect of current affairs is eliminated. Now we are seeing how many actually static questions come. Why science and tech is not something that can only be done through current affairs. ये प्रूव कर रहा हूं मैं आपको। This is the hypothesis. This is the problem statement. Now I am trying to prove this to you. ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर इज गिवन हियर। 2023 के कोर्स में क्वेश्चन 2024 का है। 1 आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट हिट। अब ये करंट अफेयर्स नहीं है, दिस इज स्टैटिक इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट फाइटर जेट्स बिफोर। वही पीवाईक्यू एनालिसिस से आप एक ट्रेंड देख के ये काम करते हो। सेकंड क्वेश्चन दैट वाज अ डायरेक्ट हिट। थर्ड क्वेश्चन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, given directly here, how fuel cells work, water vapor is released, etc., etc. Fourth question, interoperable network of 3D virtual worlds, which is metaverse. Fourth question, that was a direct hit. ठीक है। Fifth question, use of radars. Now this is a difficult question to solve, but I had taught radars in detail, right? So हम 4.5 मान लेते हैं, right? Some people will be able to get it, some people will not be able to get it. It's obviously impossible to teach this directly, but yes, you can teach the concept, और concept से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब what did we prove? That even without studying current affairs, आप current affairs को हटा दो और अगर आप static पढ़ के चले जाओ पूरा, अगर आप static अच्छे से पढ़ के चले जाओ, you could do let's say 4.5 or let's say 5 out of 10. And from current affairs you could do, अगर आप पूरा 2024 का current affairs पढ़ के जाते, your best outcome was 1 out of 10. This differential is 8 marks.
And anybody who has failed in the prelims before today, जिनका prelims आज से पहले नहीं हुआ है, कोई भी आप में से अगर ऐसा है, आप श्योर होगे कि दिस इज अ ह्यूज नंबर. जब हम प्रीलिम्स में नहीं होता हमारा प्रीलिम्स, तो अल्टीमेटली इट इज अ गैप ऑफ 3-4 मार्क्स ओनली, राइट? दिस इज द डिफरेंशियल वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर. तो पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? इज दिस क्लियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? दिस इज व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस प्रॉपर्ली, बिकॉज ये डिफरेंशियल हमें और कहीं क्रिएट करना बहुत मुश्किल है. पॉलिटी में किसी और से 8 नंबर ज्यादा लेना बहुत मुश्किल है. दिस इज वेरी इजी टू डू. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे. What is our class methodology going to be? देखो, science and tech is slightly special in terms of there is a lot of explanation here. यहां पर होता क्या है कि ultimately, जैसे मैं आपको questions के थ्रू दिखाता हूं. Let's look at one of these questions. ये question बहुत appropriate है देखने के लिए. How many of the above are considered 5th generation fighter aircraft? ठीक है, now answer here is none of them. इनमें से कोई भी 5th generation fighter नहीं है, right? अब ultimately you only had to remember that India does not have a 5th generation aircraft, and this is 4.5 generation, this is 4.5 generation. MiG, anyone would know, is not. MiG is a very old aircraft, anyway would not be 5th generation. Ultimately you have to remember only this much, है ना? एक और example. Let's look at this question. If you look at this question, you only had to remember that CRISPR-Cas9 is a molecular scissors, and you could solve this, है ना? But is the when you have to remember only this, but can we study only this much? क्या हम सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ सकते हैं कि CRISPR-Cas9 is molecular scissors? नहीं. We have to read in detail. We have to get all the points in detail. We have to get the explanation in detail. We need to know how DNA, RNA, etc. is being manipulated by CRISPR-Cas9, how it is a system that has been borrowed from bacteria, how it is used for designer babies, and what are the ethical considerations. But how much do we have to remember ultimately if we know the explanation? So ultimately I'm saying in science and tech you'll see this multiple times कि अगर आपको explanation आती है and then you remember certain facts, your job is done, right? But you need to know the explanation so that you don't get confused. Otherwise you'll get confused in the options, etc, etc. जैसे वहां पर वो extreme statement थी but सही थी, right? So there is a lot of explaining to do, and I am assuming that people who are studying here are not coming from a science background. So I am teaching as if I will teach a 10th class student. 10th तक तो आपने science पढ़ी है. I will teach as if I am teaching a 10th class student. And मैंने 10th class के students को भी biology पढ़ाई है, by the way. So when I gave my AIPMT in 2015, after that my rank was, all India rank was 70. After that there are 3 months before you go to college. उन 3 महीनों में I used to teach in Akash Institute, and I used to teach biology to my juniors. So I have that experience, and that is where we are coming from, right? So I am teaching as if I am teaching a 10th grader. अब there is a lot of explanation. अब अगर explanation मान लो 15 दिन में हम 1500 slides की explanation कर लेते हैं. So this is, let's say, this is one slide, for example. If we have, let's say, 1500 slides like this, it is impossible for me to expect that you will remember all these 1500 slides or be able to revise all of these slides. तो मैंने क्या सोचा है, जैसे ये स्लाइड्स आपके सामने चल रही हैं, इन द क्लास आई विल टीच फ्रॉम दीज स्लाइड्स एंड आई विल गिव यू ऑल द पीडीएफ्स. ठीक है, तो इसकी आप टेंशन मत लेना कि पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, एक्सेट्रा. आई विल गिव यू एवरीथिंग, all the slides, everything I'll give to you. But I don't want that you are revising from this lengthy 1500 page document. तो मैंने क्या किया, slides will have a lot of explanations. I'm also going to show you a lot of videos in the class. जैसे when we read the HIV virus, I'm going to show you how the HIV virus infects the cell, and we're going to play a video right here. When I teach you the solar system, I'm going to open the solar system on this board. That is the advantage of studying on a digital board. You can open things here and study directly. And science is anyway very practical, very real life. So I'm going to teach from these slides. I'm going to give you for revision a set of concise handwritten notes. पहले I used to give those one pager notes, but उसमें क्या होता है, कभी resolution की problem आ रही है, कभी printing की problem आ रही है. I'm going to give you handwritten notes. These handwritten notes will act as your one pagers. तो हर class के, let's say I do
let's say I teach you class 1. In class 1 we study basic biology, right? The problem in making one pages which I used to make on XMind was वहां पे diagrams insert नहीं कर सकते, उसमें एक particular format में लिखना है. I will write these notes for you. These handwritten notes, assume that for every class a maximum of 10 pages. Maximum बोल रहा हूं मैं आपको, maximum of 10 pages per class, right? This is what I will expect you to read in the end. So this handwritten notes, we have 15 to 60 classes. So I would say, even taking all possible allowances, maximum of 200 pages. Even this is not something which we'll reach. मेरे हिसाब से this should happen in about 150, 160 pages. So 150 pages of science and tech, and not 150 printed pages. 150 handwritten pages. Handwritten pages are anyway easier to read, easier to compile. So I will teach from these slides. You will have this PDF. आपको कभी reference के लिए कभी कुछ देखना हो, you can go and refer to this. But I want that everything that you need to remember with some conceptual explanation should come in these handwritten notes, so that when you are revising for prelims, when prelims is let's say 1 week away, then you need to revise these pages in 4 hours. तब आपको ऐसा चाहिए होता है ना कि मैं बस जल्दी से जल्दी ये सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए. दैट विल बी डूइंग. सो स्लाइड से पढ़ाऊंगा, जैसे ये स्लाइड्स हैं, और हैंड रिटन नोट्स में आपको दूंगा. क्लास हैपेंस एट 9 AM इन द मॉर्निंग. पिछले दिन, सो 1 day बिफोर, लेट्स से टुमारो इफ वी हैव अ क्लास, आज रात को 8 PM तक I will upload the notes for you, right? See, it is a dynamic subject and I have to write the notes myself. That is why uploading them will happen in time, in due course. But you can open them even after the class is done. तो वो problem नहीं होगी. This is what we are going to do, right? Slides like this, जैसे ये slide है, इसी slide पे पढ़ेंगे. I will explain things here. अब मैं आपसे क्या expect करता हूँ? मैं आपसे expect करता हूँ कि whenever you come to the class, you carry one notebook with you. देखो, सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ. I'm giving you the slides, I'm giving you the handwritten notes. You don't need to do anything. But it's not right that you don't participate actively, right? अगर आप पीछे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए क्लास देखोगे, you will not enjoy it. So I will expect that you bring out a notebook, right? And you make running notes with me. This is my methodology of teaching anywhere. Like everywhere that I've taught like this. You make running notes with me, right? और ये slides के साथ आप देखो. In the end, you will have the handwritten notes. You don't have to do the consolidation job. You don't have to put everything together. वो काम मैं आपके लिए already कर रहा हूँ. Once I have taught you the lecture, in the end of the lecture, we will do a PYQ based test. ठीक है? And I will be monitoring your performance in the test. एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ. I don't know if you can see or not. I just got these made. So these are lapel pins of Sarrthi IAS and Clarity for UPSC. People who perform in these tests, I will send these lapel pins to your house. मैंने बहुत सारी बनवा ली. I've got 50 of them made. If you perform well in these tests, I will send them to you as a gift, right? इससे ज़्यादा मैं, I mean, I would love to give you rewards and gifts. This is, I think, one of the best thing that I can give. It has sentimental value also for me. You perform well in these tests, आपके नाम मुझे याद हो जाते हैं, right? For example, when I was teaching economy, I could remember the names of people who were performing well. I see the chat is private, but मुझे वो नाम याद रहते हैं जिन लोगों के marks अच्छे आ रहे होते हैं. You perform well in the test, and I will send you these gifts. ठीक है? All right. So this is what we are going to do. Is the class methodology clear? कि आप notebook पे running notes बनाओ. PYQ का test होगा end में. I will teach from slides. These slides will also be available to you, and I will make handwritten notes with diagrams, with references, with some PYQs also. And this is what you ultimately revise from. We will try to ensure that in 150 pages our science and tech is done. Is this all clear? Let's go forward from here. अब देखो, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की. करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से क्वेश्चन नहीं आए डज नॉट मीन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं थे, राइट? करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस डिड नॉट हैव दोस क्वेश्चंस. दैट डज नॉट मीन करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं आते. आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग फॉर करंट अफेयर्स. यू डोंट हैव टू रीड सेपरेटली. पहले तो इस बात को सॉर्ट कर लेते हैं. आपको अलग से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने. करंट अफेयर्स पढ़ना मेरा काम है, ठीक है? नाउ what are we going to do for current affairs? I have read, or I am going to read every single article that has appeared in the Hindu from May 1st 2024 to all the way end to April end. अब मैं आपको पढ़ा फरवरी में रहा हूं. तो while we are doing this course,
फ्रॉम May 1st 2024 टू January 31st 2025 जितने करंट अफेयर्स यहां पर आए हैं, जितने करंट अफेयर्स यहां पे आए हैं, प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 2024 एंड 2023 ऑल्सो, दिस वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, ये हम अभी कवर करेंगे साथ में ही क्लास में। जैसे हम बायोटेक हमने करा, वी रेड बायोटेक, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ दिस ईयर माइक्रो आरएनए इज इन न्यूज, so then we'll read microRNA because the Nobel Prize has been given for it. Then we'll read microRNA in detail from here only. ठीक है, this is what we are going to do. अब once we have done this, I will take one updated class in April to cover the current affairs of Feb, March and April. ये 3 months के current affairs रह जाएंगे। इसके लिए I'll take one updated class in April. ठीक है, एक क्लास में हो जाएगा, ज्यादा कुछ जनरली करंट अफेयर्स में उतना कुछ टाइम नहीं लगता है, बिकॉज इफ वी नो द कॉन्सेप्ट देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अलावा आई एम आल्सो गोइंग टू कवर द इंडियन एक्सप्रेस। सो इंडियन एक्सप्रेस डज नॉट गेट अ लॉट ऑफ साइंस न्यूज, all the science news in the Indian Express comes on the explained page. So everything that has been there in Indian Express explained page plus the Hindu from May 1st 2024 to 31st January 2025, and this is my challenge to you. Once the classes are done, आप खोल के देख लेना, आपको कुछ भी मिस होता हुआ मिल जाए तो, because I have read every single paper. I have a compilation of newspapers, so those like 600-700 pages per month, the entire newspaper PDFs are compiled and I have read all of them. तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस यहां पर जो मैं पढ़ा हूं उसको पढ़ लेना, राइट? अब इसके बाहर से करंट अफेयर से लेट से कोई क्वेश्चन आ गया, then we'll just ignore it again, because we have to be better than others. This is definitely more than that last person is doing, right? अब लोग पूछते हैं, is this enough for UPSC? This I can't tell you. हो सकता है UPSC इससे ही सारे क्वेश्चन बना दे, इससे एक भी क्वेश्चन ना बनाए. Our objective can only be being better than that last person. This is definitely more than that last person is investing. That is for sure, right? With this, we can be certainly or reasonably confident that we'll be better than that last person. This is what we are going to do. So current affairs sorted, 2023 के important current affairs, 2024 के important current affairs, and everything that has appeared in the paper. I'll show you the articles in class when I'm making the notes and I'm making the slides. I'll show you the articles in class. We'll cover every single article that has appeared. Okay. So this sorts out our current affairs for us. तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. Feb, March और April के current affairs updated मैं एक बार April end में एक क्लास लूंगा. Once April is done, so maybe I take it on 1st May or something. एक क्लास होगी 3 घंटे की, बस इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें आई होंगी वो कवर कर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस आल्सो डू कम फ्रॉम हियर, दे डू कम फ्रॉम हियर. ऑलराइट, अब 1 पेज नोट्स की मैं बात कर चुका हूं. आई एक्चुअली बी गिविंग यू हैंड रिटन नोट्स, और इन हैंड रिटन नोट्स को आप यूज कर सकते हो फॉर क्विक रिविजन. सो देयर आर गोइंग टू बी लेट्स से अ सेट ऑफ 150-160 पेजेस. इन 150-160 पेजेस को आप यूज कर लो एंड योर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. सो यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स हियर आल्सो. अब before I go forward, I expect some things from you, right? I'll tell you what you can expect from me. I'll first tell you what I basically told you what you can expect from me. I'll tell you what I expect from you. ठीक है, देखो यार, हम साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? It will not be clear to you on day one. Everything will not get clear to you. ऐसा नहीं होगा कि मैं पहली क्लास पढ़ाऊंगा, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और आपको इमीडिएटली सब क्लियर हो जाएगा. It takes times for things to connect. ठीक है, टाइम लगेगा for things to get together. जैसे बायोटेक हम पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहली 2 क्लास बायोटेक की आपको चीजें haphazard लगेंगी, 3rd क्लास में everything will connect. I expect from you the first thing, which is patience. ठीक है, आप थोड़ी पेशेंस दिखाओ. I will give you the time to ask your doubts, but you show me the patience first. When I tell you this concept is complete, only then you ask your doubts. Second, देखो यार, ये ऑनलाइन क्लास है and ideally we should not be studying online, right? Because screens by nature are distracting. अब there's nothing we can do about it, right? We are all scattered in different parts of the country, so we have to study online. Understand that one momentary lapse of concentration. आपको वैसे भी पता है कि आपने आज तक साइंस कैसे पढ़ी है, ठीक है? You know how you've studied science till date. आपने स्कूल में साइंस कैसे पढ़ी है, आपने कब कैसे पढ़ी है, आपको भी पता है. One momentary lapse of concentration and you will not understand. ठीक है? So it's fairly important for you to concentrate here.
I will expect absolute concentration, and absolute concentration के लिए it is required that the chat is off. तो मैं chat off रखूंगा. I will keep the chat off because मुझे लगता है कि आप concentrate कर ही नहीं सकते जितने messages आप लोग लिखते हो chat में. मैं आपको बता रहा हूं, I have been an online student my entire life. मैंने यूपीएससी की सारी तैयारी ऑनलाइन करी है. मैंने आज तक चैट में कभी भी कहीं भी कोई मैसेज नहीं लिखा. मैंने यूट्यूब की आज तक किसी वीडियो पे कोई कमेंट नहीं किया. मैं बहुत यूट्यूब कंज्यूम करता हूं. आई हैव नेवर कमेंटेड ऑन अ वीडियो बिकॉज व्हाई? फोकस ऑन द कंटेंट ना. जो चीज मेरे सामने है उस पर फोकस करते हैं. अब लेट्स से यू हैव अ डाउट, दैट इज फेयर, दैट कमेंट इज फेयर. एनीथिंग एल्स इज नॉट फेयर. नीदर इज इट एक्सपेक्टेड, ना ही आपको करना चाहिए. फोकस ऑन व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. And last and most importantly rather, I want discipline from you. How do we enforce this discipline? देखो, मैं आपको ये तो नहीं रेकमेंड कर सकता कि आप क्लास लाइव देखो या नहीं, डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल. बट अगर आप देख सकते हो, वॉच द क्लास लाइव. When you watch the class live, participate actively in the questions. When I'm telling you to write something down, write it down. When I'm saying कि साथ में running notes बनाओ. Because देखो यार, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस बहुत रूडिमेंट्री है. हमने ढंग से नहीं समझा है और यूपीएससी बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा. यूपीएससी एक हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, राइट? हमें अगर बायोटेक सारी समझनी है, टाइम लगेगा सारी चीजें समझने में. बट आई प्रॉमिस दे विल कम टुगेदर फॉर यू, राइट? कोई पीवाईक्यू नहीं छूटेगा, कोई करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा. मैं आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखाऊंगा. नथिंग विल गेट लेफ्ट. दैट इज माई गारंटी टू यू. बट विद दैट then I expect these three things from you also, कि आप ये सारी चीजें करोगे. Now, is this clear? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ये आपको क्लियर है क्या? This is what I expect from you and you have to deliver on this. मैं आपसे और इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं. अब श्रेया क्यों समझ नहीं आती? हैंडराइटिंग इतनी खराब नहीं है यार मेरी, बोर्ड पे भी तो लिखा हुआ समझ आ ही रहा है. अब बात करते हैं टाइमिंग्स और शेड्यूल की, राइट? टाइमिंग्स और शेड्यूल की बात करते हैं. सो अब देखो, I had decided that we'll start from the 18th, but then I talked to a lot of people who were in step. कल भी मैंने बात करी सबसे, and PRP में भी मैंने लोगों से बात करी, and I've understood that you have a lot of backlogs, right? So we will start from the 20th. 20th is Thursday. Like I told you, I do have a little bit of a subclinical infection also. So, I mean, it's actually getting difficult for me to stand here also. So I've just thought कि हम 20th से start कर लेंगे. I'll recover till then, and आप अपने backlogs cover कर लेना. So we'll start on the 20th. This is the schedule that we're going to follow. पहले इसकी बात कर लेते हैं. So we start on Thursday at 9 a.m. right? And 9 a.m. means 9 a.m. also for me. मैं आज लेट आया हूँ. I will promise and ensure that मैं अब लेट ना आऊँ. 9 a.m. means we'll start at 9 a.m. right? So we'll start on Thursday. We'll start with biology. I have given 1, 2, 3, 4, 5 classes to biotech. This is extra. I have budgeted extra, right? 5 से ज़्यादा 5 नहीं लगेंगी हमें. But I've budgeted extra because it is the most important part. So Sundays को कोई क्लास नहीं रख रहा हूं मैं. We'll start on Thursday, biology, then biotech, then we'll do health issues, then we'll move on to nanotech, then space and defense, then emerging technologies, then payment technologies, then IPR and role of scientists. So everything that is asked, we'll do all of it. ऐसा कुछ नहीं है जो छूटेगा, right? We'll start on Thursday. Thursday को 9 बजे हम start करेंगे, 9 a.m. एंड सेम फॉर्मेट रहेगा. 9 to 12 हम क्लास करेंगे, ठीक है? और 12 बजे मैं आपसे पीवाईक्यू का टेस्ट कराऊंगा. सी द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल. द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल टू वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो वो भी आपके पास ऑप्शन है. एज मेनी टाइम्स एज यू वांट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स. तो अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप सुबह नहीं हैं अवेलेबल, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. बट अगर आप अवेलेबल हैं, वेक अप अर्ली विद मी, राइट? यू ऑल्सो वेक अप अर्ली, आई ऑल्सो वेक अप अर्ली. लेट्स स्टार्ट आवर डेज with science and tech, and let's understand the beauty of science here, right? So that's what we're going to do. We're going to start on Thursday. अब जो अगले 2 दिन हैं, use today and the next 2 days to cover whatever backlogs you have, right? अब this is how we're going to go. This is the format of the class. We're going to start with biotech. Biotech करने के बाद हम health करेंगे. Then we'll move on to nanotechnology. फिर nanotech से हम करेंगे साथ में space and defense because they are fairly linked. Then we'll do quantum computing. Then we'll do emerging technologies, IPR, and finally role of scientists. In this emerging technologies also let's include payment technologies. So payment technologies भी हम यहीं पढ़ने वाले हैं. Things like UPI, NEFT, etc., etc. In detail we are going to see here.
This you already know. Up. Now I hope most doubts are clear, right? एक बार मैं reiterate कर देता हूँ the information that we've understood here. That on Thursday we'll start. Thursday the 20th. And I will see you at 9 a.m. And we'll start with basics of biology. ठीक है? अब if you have any questions you can write. जो questions यहाँ पे आ जाएंगे I'll write on the board and we'll solve and I'll answer all of those doubts together. मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप आराम से अपना 2 मिनट में क्वेश्चन टाइप कर सकते हो. Please don't type repeatedly. Come to most of the questions I've written on the board. तो इनको address कर लेते हैं. पहले let me address this. This I feel is important. People who took this course in 2023, what to do? देखो यार, देखो, I'll tell you the difference honestly. ठीक है? I am not going to change fundamentally. I am the same teacher that I was. But of course, some things are also going to change. In 2023, it was my first ever teaching project. अब अगर मैं सेम चीज दोबारा पढ़ाऊंगा, of course, I am going to do a better job of it, right? अब डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या इसमें याद था 2023 में और क्या क्या आपको याद नहीं था. This is the thing and what all you understood. If you've understood everything, this year we are going to have new current affairs, obviously. Whatever has changed here, I have made the content better. So I'll tell you how I've prepared the content. मैंने खुद अपने 2023 के लेक्चर्स देखे हैं पहले और मुझे लगता है कि उसमें बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट था. You know, they might have been the industry best standard at that time, but I myself feel that there is a lot of scope for improvement. So current affairs सारे improve होंगे, obviously will be included. I have improved the content. In my opinion, I have improved it significantly this year. And if you have seen these lectures before, I am assuming that at least you know all the concepts fairly well. तो आप ये काम कर सकते हो that you can watch the recordings at 2x. जब आप recordings 2x पे देखोगे, you will see areas where there are new things, right? First class में ही आपको समझ आ जाएगा that there are a lot of new things, right? 2x तो चलो थोड़ा जल्दी है, maybe at 1.5x you can watch the recordings. ठीक है? जहां आपको कुछ नया concept दिखे, wherever you see a new concept, for example, pause and watch that at 1x. Wherever you see a new current affairs, pause and watch that at 1x. Now, I am saying this only with the assumption. जैसे अभी मैंने CRISPR-Cas9 की बात की, तो आपको याद होगा CRISPR-Cas9 कैसे काम करता है. How it is a system that has been borrowed from bacteria, how it works in bacteria, how it has been then appropriated to work in humans. अगर आपको ये सब कुछ पता है, then this is true for you. अगर नहीं पता है तो चुपचाप पूरी क्लास देखो. ठीक है? अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक ऑफ करंट अफेयर्स. इनका क्या, सॉरी अबाउट दिस, इनका क्या करना है? बिग चैलेंज दैट ऑल ऑफ अस हैव, राइट? देखो यार, मुदस्सर इज ऑल्सो टीचिंग करंट अफेयर्स. ठीक है? जो भी कंटेंट मुदस्सर ने बनाया है, राइट, वट एवर कॉन्टेंट मुदस्सर हैज मेड, आई हैव रेड, राइट? तो या तो आप वहां से देख लो या आप यहां से देख लो. दोनों जगह से देखना इज डुप्लीकेशन. तो अगर आप मेरे साथ साइंस एंड टेक की क्लास देख रहे हो, whatever content Mudit sir has made for current affairs, I have myself read it. मैंने खुद पढ़ा है उसको और मैं उसको पढ़ाऊंगा अभी आपको. ठीक है? तो आपको यहां पर कोई भी इशू लेने की जरूरत नहीं है. मुदत सर के सारा करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर होगा. मैं उनके नोट्स से ही पढ़ के पढ़ा रहा हूँ आपको. आई एम रीडिंग हिज नोट्स एंड द न्यूज़पेपर सेपरेटली सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग. तो अगर आप ये नोट्स, ये लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको मुदत सर के करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है. साइंस एंड टेक में यू कैन जस्ट लुक एट दिस. सेम थिंग आई विल से इन इकोनॉमी, सेम थिंग आई विल से इन एनवायरनमेंट. इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जो आप मेरे साथ कर रहे हो, यू कैन जस्ट डू दिस हियर. या फिर आप सिर्फ मुदत सर के करंट अफेयर्स कर लो. देन यू डोंट वॉच द करंट अफेयर्स क्लासेस हियर. सेम चीज 2 बार पढ़ने की क्या जरूरत है? तो जहां आपको समझ आता है, एंड देयर इज नो कॉम्पिटिशन हियर बिटवीन द टू ऑफ अस. हम साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या चीज करंट अफेयर्स में आनी चाहिए, क्या चीज नहीं आनी चाहिए. Whatever he has written, I 100% believe that his expertise is more than me in identifying what will come in the paper or not. Right? वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी बता देते हैं पेपर देख के कि यार ये न्यूज आ सकती है, ये न्यूज आ सकती है. तो मैंने कहा ठीक है, जो न्यूज उन्होंने सिलेक्ट किए वो मैं पढ़ लेता हूँ और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है ना? सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. करंट अफेयर्स अगर आप यहाँ कर रहे हो तो एटलीस्ट मुझे सर जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है?
अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। दिस आई विल एड्रेस इन डिटेल ऑन यूट्यूब कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, एक्सेट्रा व्हाट टू डू, राइट? सिमिलरली इवन रिवीजन आई विल एड्रेस, बट राइट नाउ रिवीजन एंड बैकलॉग, ये क्वेश्चन मुझे बहुत दिखा। देखो यार, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जनवरी में स्टार्ट करके सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ें, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ें, सबके लेक्चर देखें, तो देखो बैकलॉग्स तो आएंगे। It's not easy to cover everything from January to April, right? There will be some backlogs. I will address both these questions on YouTube also in detail, right? In detail, I will address these questions. But for now, I'll just like to tell you that revision is something that ideally right now, even if you are missing out on, right? अगर आपको अभी लग रहा है कि यार मुझे उतने अच्छे से याद नहीं हो रहा, I'm not able to recollect things properly. If that is the case, it's okay, right? You can let it be. अभी आप इसको जाने दे सकते हो। आई विल मैनेज दैट विद यू, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी आप उसके क्वेश्चंस करते रहो। देखो यार, द सेकंड सेट ऑफ रिवीजन दैट विल डू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वन दैट विल डू आफ्टर April 20th। तो अगर आप हमारा प्लान देखो, हमारा प्लान यही है कि April 20th तक, टिल April 20th वी विल फिनिश एवरीथिंग। उसके बाद आफ्टर April 20th वी विल डू अ सेकंड सेट ऑफ रिवीजन। दिस सेट ऑफ रिवीजन विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द वन दैट विल मेक और ब्रेक आवर अटेम्प्ट। अब हमें करना क्या है, इसके बाद हमने ये प्लान किया है कि 3 to 4 डेज में हम एक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। तो अगर अभी आपको एक दो चीजें भूल भी जाती हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक, राइट? यहां पर रिवाइज करने के लिए यू शुड हैव ऑल द थिंग्स रेडी इन योर हेड। यहां पर रिवाइज करने के लिए यू नीड टू बी कंप्लीटली सॉर्टेड एंड कंप्लीटली अलाइंड फॉर दिस रिविजन। ये कैसे होगा? हाउ विल दिस हैपन? ये होगा जब आप अभी एक तो जो भी चीजें आप पढ़ोगे, यू विल कंसोलिडेट, you will put your notes in one place, and at least you will understand the concepts properly. अगर आपको मैं बोल दूं कि यार साइंस एंड टेक के मेरे पास, या इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी के मेरे पास ये हैंड रिटन नोट्स रेडी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ आ चुके हैं। कोई मुझे इमीडिएटली जैसे ही बात करता है ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, तो मुझे पता है वो कहां है। जैसे ही मेरे से कोई बोलता है एग्रीगेट डिमांड क्या है, मुझे उसके 4 कंपोनेंट्स याद आ जाते हैं। तो रिवाइज तो आप इस टाइम पे कर लोगे ना यार। See, ultimately, whatever you revise after this date, आप ये भी बात मानोगे मेरे से, concepts that you know since January, right? जो डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, विल डिफरेंशिएट। जैसे साइंस एंड टेक को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक चीज है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट कुड बी, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA, ठीक है? और एक चीज है फैक्ट। फैक्ट है कि इस साल के नोबेल प्राइज में माइक्रो आरएनए की बात हुई है, और माइक्रो आरएनए हेल्प्स इन एवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन, ठीक है? दिस इफ यू हैव स्टडीड इन जनवरी, तो आपको प्रीलिम्स डेट तक शायद याद ना रहे। दिस इवन इफ यू हैव स्टडीड लास्ट ईयर, हो सकता है आपको प्रीलिम्स डेट तक याद रह जाए। तो अभी क्या फोकस करते हैं? व्हाट शुड बी आवर फोकस टिल 20th April? फर्स्ट फोकस शुड बी कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। 20th April पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, there is some new concept that I have to read that I don't understand already. Let's say there is the concept of interoperability in that we're going to read here in payment technologies. Let's say there is the concept of how the metaverse works, how blockchains work, what is proof of authority versus proof of stake versus proof of work. ये concept miss नहीं होना चाहिए, ठीक है? Facts can be missed. अभी फैक्ट अगर अभी सारे याद नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज आई विल हैव टाइम आफ्टर April 20th टू रिमेंबर देम। तो पहली चीज तो ये है दैट कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी क्लियर, फैक्ट्स इफ दे आर मिस दे आर ओके। नाउ व्हेन इज इट ओके टू मिस फैक्ट्स? अब इसमें भी एक कंडीशन है ना, ऐसा थोड़ी है तो फिर हम कहेंगे यार कोई भी फैक्ट मुझे याद नहीं रहा। इट इज ओके टू मिस फैक्ट्स ओनली इफ आई हैव एवरीथिंग फेयरली कंसोलिडेटेड, कि मेरे पास लिखा हुआ एक जगह पे है, तो मैं एंड में रिवाइज कर लूंगा। I know the concepts and I have all the facts that I need to know written in one place in a concise form. तभी हम पॉइंटर नोट्स यूज करते हैं पीआरपी में। तो आप अभी कॉन्सेप्ट से फोकस करो, डोंट मिस आउट ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स नाउ। जो कॉन्सेप्ट्स आप अभी याद करोगे आपको हमेशा याद रहेंगे। 20th April के बाद व्हेन यू डू दैट सॉर्ट ऑफ रिविजन, अगर कुछ फैक्ट्स अभी मिस हो रहे हैं कोई बात नहीं, देन वी कैन एड्रेस देम हियर, ठीक है? इज दिस क्लियर?
ये बहुत लोगों का डाउट था इसको लेके, करंट अफेयर्स और रिविजन. I think this also addresses your question of backlogs. Is this clear? All right. अब बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स और स्लाइड्स की. You don't need to print the slides. आपको स्लाइड्स प्रिंट करने की जरूरत नहीं है. They are only for reference. देखो यार, I can teach directly from the handwritten notes also. The only thing is, science and tech requires a lot of explanation. ये जो conceptual clarity हमें चाहिए, this requires a lot of explanation. That is why I will teach from the slides. You don't need to print the slides. आपको नहीं करने की जरूरत. दे आर अ रेफरेंस मटेरियल फॉर यू. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपके हैंड रिटन नोट्स में लिखा है. इवन वॉट एवर इज प्रिंटेड एंड इंपॉर्टेंट देयर, आई प्रिंट इन योर हैंड रिटन नोट्स. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. आप एक बार देख लो द फॉर्मेट ऑफ द हैंड रिटन नोट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट दे आर बेटर देन द वन पेजेस दैट आई वाज डूइंग. मैं खुद ही कर रहा हूं, मेरे लिए आसान है वन पेजेस बनाना. इट्स इजियर फॉर मी टू मेक दैट टेक्स्ट इन वन पेजर. इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक दैट हैंड रिटन नोट. मुझे खुद लिखना पड़ता है. But I know it will create a better outcome. That is why I'm telling you, just wait for them, see what they are like. You'll understand why they are better. ठीक है? All right. अब बात रिवीजन की भी हो गई है और बैकलॉग्स की भी हो गई है. अभी अगर रिवीजन में कुछ मिस हो रहा है in terms of concepts, then it's an issue. कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए. फैक्ट मिस हो जाए कोई बात नहीं, फैक्ट हम कर लेंगे रिवाइज, है ना. फैक्ट्स हम रिवाइज कर लेंगे. कॉन्सेप्ट्स मिस नहीं होने चाहिए एंड फैक्ट्स कंसोलिडेटेड होने चाहिए. तो मैं क्या चाहता हूं कि अप्रैल 20 वाले दिन आप ये मुझे बोल पाओ कि एक तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, मुझे कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, आई नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आई नो ऑल द सब्जेक्ट, एटलीस्ट आई रेड ऑल द सब्जेक्ट्स, आई नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड आई हैव द फैक्ट्स कंसोलिडेटेड इन वन प्लेस. नाउ आई कैन रीड फ्रॉम दीस फैक्ट्स. जब मेरे पास 3-4 दिन बाद में होंगे इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए, तब मैं रिवाइज कर लूंगा. तब अगर कॉन्सेप्ट याद करने पड़े तो बहुत दिक्कत होगी. एंड देन इफ only facts have to be remembered, तो वो तो याद हो जाएंगे. उसके बाद we have another set of revision after April 20th, the one that we'll do in the final week. तो वो मैनेज कर सकते हैं, है ना. कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट मिस मत करना अभी. With that, I'll just like to end this session here. Thank you very much for your time. I'll see you now on Thursday. Thursday को 9 बजे मिलते हैं and we'll start with biotechnology and biology first.